After many twists in the Himachal Pradesh crowning saga, it's now official. Sukhvinder Singh Sukhu will be the new Chief Minister of Himachal Pradesh and the Deputy Chief Minister will be Mukesh Agnihotri. The Chhattisgarh Chief Minister Bhupendra Patel announced this at the Congress's Legislative Party meeting in Shimla on Saturday. After the CLP meeting, party leaders met with the governor at the Raj Bhavan and the oath-taking ceremony will now take place on Sunday at 11 a.m. The Congress's handsome win in the hill state on Thursday, though, was marred a bit on Saturday by the challenges the Congress High Command faced in arriving at an unanimous choice for Chief Minister. And hours before that big meeting to decide on its Chief Minister, we had many staking claim to the job, including Pratibha Singh, who had a sharp reminder for the leadership in Delhi, saying that the elections were fought and won in her husband's name, that's Veerbhadra Singh, who died last year. And as she put it, quote, it would be a disaster to sideline his family. However, she didn't enjoy popular support among the grand old party's newly elected 40 MLAs, and so she was dropped from the contest. विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं जो कैसे चलेगा राज्य के? बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। और हाईकमान का डिसीजन है सर, हाईकमान का बगैर का डिसीजन, हाईकमान का डिसीजन, हाईकमान का डिसीजन। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं उन वादों को अक्षरशः लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। प्रतिभा जी, अंदर क्या कुछ डिसाइड किया गया, क्या कुछ? वो सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाई कमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं। Well, finally, an end to 2 days of high drama here in Himachal. The Congress High Command has chosen Mr. Sukhvinder Singh Sukhu to be the next Chief Minister of Himachal Pradesh. We saw that Congress Legislature Party meet today as well, and 2 or 3 key decisions and key takeaways from that particular meet. One, of course, Mr. Sukhu has been made the Chief Minister designate. He will take oath tomorrow. The other important thing is that Mr. Mukesh Agnihotri, who was also one of the contenders or one of the CM probables here, has been made the Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh. And Vikramaditya, who is the son of Pratibha Singh, who's of course pitched herself as a CM candidate, as a CM face as well. Vikramaditya is likely to be given an important ministry in the cabinet. Things will be clearer by tomorrow, but as per sources he will be given one of the most powerful ministries in the cabinet. That remains to be seen as to how that pans out tomorrow. I remember tomorrow the oath taking ceremony will take place just a day ahead of the oath taking ceremony in Gujarat by the BJP. So here tomorrow top Congress leaders will be present for the oath taking ceremony. Mr. Kharge,
Priyanka Gandhi herself, Rahul Gandhi, all of them will be present. Priyanka Gandhi, of course, has campaigned extensively in Himachal, and in fact, she was one of the final decision makers as far as the Himachal CM is concerned. Now, remember what stood to Mr. Sukhvinder Singh Sukhu's advantage. One of the primary reasons why he was made the Chief Minister designate was, the fact that he enjoyed the backing of close to 25 to 27 MLAs. And remember all of this high drama that we saw unfold here, and Congress observers being rushed, they're holding internal meetings, 2 CLP meetings held, all of this happening in the backdrop of poaching, horse trading claims. So it was important for the Congress to keep its flock together and at the same time make sure that the Congress is intact and factionalism and infighting does not deepen. So finally an end to that high drama, and Mr. Sukhvinder Singh Sukhu will take the reins as the next Chief Minister of Himachal Pradesh tomorrow. Now, the state of Himachal Pradesh has been true to the tradition of changing parties every election, but the Congress's promise of returning to the old pension scheme really seemed to have worked in its favour, so much so that some are even considering it as a template for 2024. The Congress win in Himachal Pradesh has given the party a much-needed shot in the arm, a party which now vows to bring the old pension scheme across India if voted to power in 2024. मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा. जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा. बहुत गहरा रिश्ता है. The old pension scheme was an election promise in Gujarat and Himachal Pradesh. रेवड़ी और एम्पावरमेंट के अंतर को समझना चाहिए. अगर सब गांव तक बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचना तो आवश्यकता है, तो हर गांव तक बिजली पहुंचाना ये एम्पावरमेंट है. केवल सरकारी पैसे को इसलिए लुटा देना कि आप किसी का पर्सनल गेन हो जाए और उससे वोट आ जाए, वो रेवड़ी बांटना है. Chief Ministers of 2 states, Rajasthan and Chhattisgarh, have asked the centre to return the people's money under National Pension Scheme for restarting the old pension scheme in their states. The Chhattisgarh government has in fact issued a notification in April 2022 and has got consent of a number of state employees who want to revert to the old pension scheme. Not only Congress, even the Aam Aadmi Party government in Punjab has decided to revert to the old pension scheme. State data reveals that it will benefit almost 1.75 lakh employees. Meanwhile, other states like Arunachal Pradesh, Assam, Telangana, Tamil Nadu, Jharkhand and Kerala also want to go back to the old pension scheme and have formed committees to review the feasibility. In the old pension scheme, after retirement, an employee is entitled to receive 50% of their last drawn salary and dearness relief or their average earnings in the last 10 months of service, whichever one is higher. Additionally, for government employees only, the old pension scheme also had the provision of the General Provident Fund. The National Pension Scheme, however, is a contributory pension scheme where employees contribute 10% of the salary and dearness allowance, and the government pitches in with the 14%. Reports reaching New Delhi indicate that many states have stopped their contributions towards NPS. And indications are clear that in coming days, this issue is going to get more and more complicated. Hope that the Aam Aadmi does not suffer when political parties slug it out for their votes. In New Delhi, this is Neeta Sharma reporting for NDTV. And after a historic win, the BJP announced Bhupendra Patel as the leader of the Legislative Assembly of Gujarat on Saturday. Bhupendra Patel will now be taking oath as the new Chief Minister on the 12th of December in a grand swearing-in ceremony. Bhupendra Patel chosen to be the Gujarat Chief Minister for a second term. At a legislature party meeting of all Bharatiya Janata Party MLAs in Gandhinagar's Sri Kamalam office. Bhupendra Patel was chosen leader of the legislative party in the presence of 3 central leaders including Rajnath Singh. भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा और गुजरात की जनता की अपेक्षा पूरी होगी. At a press conference soon after, Patel said the party would fulfill its promise of implementing the Uniform Civil Code. नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम.
The BJP is yet to announce names of cabinet ministers in the new Gujarat government. Sources say Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah and JP Nadda will be invited for the swearing-in ceremony, and cabinet ministers are likely to be finalized soon after a go-ahead from the top leadership. Asked if they would get a cabinet portfolio, BJP MLA Alpesh Thakur and Patidar agitation leader Hardik Patel said it was up to the party. पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया है, मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे दोनों नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निष्ठा से निभाऊंगा। ये आइडिया ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। Bhupendra Patel has met the governor to stake claim as the new chief minister of Gujarat, and now the Bharatiya Janata Party is all set to form government in the state for the 7th straight term on December 12th. In a grand swearing-in ceremony, Bhupendra Patel, the new chief minister of Gujarat, will be taking oath along with his 20 other cabinet ministers, the names of whom are yet to be announced, but in all likelihood, the names will be decided by the top party leadership in the national capital. With camera person Ravi Joshi in Ahmedabad, I'm Tanushree Pandey for NDTV. And the Congress leader Rahul Gandhi resumed the Rajasthan leg of the Bharat Jodo Yatra from Gudli village in Bundi district on Saturday. Rahul Gandhi had taken a day's break from the Yatra on Friday to celebrate his mother Sonia Gandhi's birthday. कौन-कौन मिला राहुल गांधी से? सब लोग मिले राहुल गांधी से? फोटो ली? सेल्फी ली? कौन सबसे पहले किसने बात की? अच्छा, क्या नाम है? बताओ आप। कुसुम मीणा। कुसुम, क्या करते, कहाँ पढ़ते हो आप? कोटा में, कोटा? मोशन इंस्टीट्यूट में। क्या बोली राहुल गांधी जी को? भाई आपकी अनुप्रति योजना बहुत अच्छी है, हमें बहुत फायदा मिला है इससे, और मतलब आप आगे भी ऐसे ही हमारे हित में कार्य करते रहे, ऐसे बात हुई है। तो और क्या बोले राहुल जी आपसे? राहुल जी ने बहुत अच्छे से बात की है, और जैसे नॉर्मल पर्सन करता है ना वैसे बात की है। नॉर्मल पर्सन ही तो है वो, आपको लगा नॉर्मल नहीं है? मतलब जैसे मतलब एटीट्यूड इतना ज्यादा वो नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा लगा मिलके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और किसने बात की? चलो आओ, आप आगे आओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा सिद्धार्थ सेन नाम है मेरा। सर सिद्धार्थ, कहाँ से हो आप? सर मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। और आप भी एलएन में पढ़ते हो और अनुप्रति योजना के तहत? जी सर, मैं एलएन में पढ़ता हूँ अनुप्रति योजना के थ्रू, और सरकार इस योजना के थ्रू 1.5 लाख रुपए देती है और 40,000 रुपए खाने पीने के लिए भी देती है। राहुल गांधी से मिले, कैसा रहा? जी सर, मिले हैं सर। मैंने उनसे सवाल किया कि अभी मैं IIT कोचिंग कर रहा हूँ और फिर 4 साल बाद कोचिंग में जाने के बाद उनका अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने के लिए उनके क्या प्लान है। तो उन्होंने बताया कि हमें स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे और कृषि में भी बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी से किसने म्यूजिक सीखना था? म्यूजिक सीखना था, आपका नाम बताइए। कृष्णा मीणा। क्या बोले राहुल गांधी जी से आप? मैंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें जाना है सिंगिंग में। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा आपका। तो उन्होंने आपका सिंगिंग सीखने का इंतजाम करा दिया है। हाँ। अधिकारियों को बोल दिया उन्होंने? हाँ, अभी बोला तो है। बोल दिया यानी हो गया? राहुल गांधी ने बोल दिया, सरकार है राजस्थान की, बोल दिया तो हो जाएगा। हो जाएगा। खुश हैं आप? हाँ। किसने बात की राहुल जी से? हाँ, जैसे तुम आओ। क्या बोले राहुल जी से? नाम क्या आपका? सर मेरा नाम दुर्गेश वैष्णव है सर, सवाई माधोपुर से। तो आपकी भी कोचिंग का खर्च राजस्थान सरकार उठा रही है? यस सर, राजस्थान सरकार उठा रही है। क्या बोले राहुल गांधी जी से आप? सर अच्छा लगा बात करके सर, और मेरे दोस्त के गांव में सर 10वीं तक स्कूल, उसको 12वीं तक करने की बोला सर। और क्या बोला उन्होंने? कर देंगे? यस सर, बोला कर देंगे। खुश है? मजा आया राहुल गांधी से मिलके? यस सर। क्या लगा? बढ़िया लगा सर। और क्या, लगा ही नहीं कि सर इतने बड़े आदमी, और क्या बढ़िया तरह से पता चल रहे हैं आप लोगों के बीच, आपसे तो मिलने आए हैं वो। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज साइमन अंसारी। तो कहाँ से हो आप? सर मैं मांगरोल से हूँ, भारत डिस्ट्रिक्ट से। अभी मोशन में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपकी भी पढ़ाई का खर्च सरकार देती है? सर सरकार देती है। क्या राहुल जी से क्या बोला आपने? सर राहुल जी से थैंक यू बोला, और राहुल जी ने से मतलब जो भी उन्होंने किया है वो बहुत ही शानदार किया है। यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये सभी बच्चे जो यहाँ पर है, इन सभी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक परिवार ये नहीं कर सकता कि मतलब वो कोटा बेच सके और उन्हें पढ़ा सके। मतलब ये बहुत ही कुछ परिवारों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये जो स्कीम निकाली है उन्होंने, वो बहुत ही शानदार है। बात की थी, क्या बोले आप? नाम बताइए। गरिमा मीणा। क्या करते हो आप? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी अनुप्रति योजना के तहत? क्या बोला राहुल गांधी जी से? सर उनकी इस योजना की फायदे और उनके बारे में बात हुई, तो हमने उनको थैंक यू किया, उनकी आर्थिक स्थिति इनके बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? डॉक्टर कि आपका लक्ष्य क्या है? कि डॉक्टर बनना। डॉक्टर के बारे में पूछा कि डॉक्टर ही बनना चाहते हो? कंफर्म लक्ष्य पूछा उन्होंने, उनका कंफर्म डॉक्टर बनना है।
All right, let's get you the big story of the day. PT Usha, she was the poster child of the Indian track and field sphere. The queen of the Indian track and field is a woman of many firsts, and the legendary PT Usha was on Saturday elected as the first woman president of the Indian Olympic Association. The 58-year-old, a multiple Asian Games gold medalist, a fourth-place finisher in the 1984 Los Angeles Olympics 400 hurdles final, was declared elected unopposed for the top post in the polls, an election that was held under the supervision of the Supreme Court appointed retired Supreme Court Judge L. Nageswara Rao. PT Usha, Indian track and field legend, unanimously elected president of the Indian Olympic Association. For the first time in 95 years of IOA's history, the boss will be a woman. Also on the panel with her are London Olympics bronze medal winner Gagan Narang and former Indian footballer Kalyan Chaube. Me and my team, with collective effort, we will do our best to the betterment of sports, and we all will work together to bring more medals for our country. The other sportspersons who will run IOA are former Olympic medalist and wrestler Yogeshwar Dutt, boxer MC Maricom, paddler Sharat Kamal, former archer Dola Banerjee and former tennis player Rohit Rajpal. Elections on Saturday were held for 5 posts, others elected unanimously. The process had begun earlier when 8 sportspersons of outstanding merit were selected on 19th of November. Their names as IOA members had to be ratified in the General Assembly today. प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, हमेशा ये करप्शन को कभी ये नहीं देना चाहिए. एक स्पोर्ट्स बॉडी होने के नाते हमारा भी ये पहला प्राथमिकता रहेगी कि आईओए में कोई भी फाइनेंशियल करप्शन ना हो. So we as sports persons are our own administrators, and getting into administration is a whole new ball game, and hope to do justice to the seat that we are sitting in. From Mirabai Chanu to PV Sindhu, many at the peak of their sporting career have also thrown their hat in the IOA ring and are a part of the Athletes Commission. More women have voted in these elections than men. I think it's really good that sports persons, being top there and they know what the problems are or what needs to be done for the sport. I think it's really good that sports persons are being elected and taking sport to another level. In New Delhi, Rika Roy for NDTV. And Cyclone Mandous made its landfall near Malapuram district and claimed as many as 4 lives, uprooting several others. Ranjit's only boat destroyed by Cyclone Mandous when it made landfall at Malapuram. A fisherman in Kovalam, he can't salvage the engine even. It's underwater and his nets were torn off when the wind hit a speed of 75 kilometers an hour. Not far away at Panayu, 44-year-old wheelchair-bound Sabira Begum is literally on the streets in the rain after a tree fell on her home, crashing open the roof. Neighbouring Chennai, which received up to 11.5 centimeters rain, bore the brunt of the cyclone. More than 400 trees were uprooted, damaging streetlights and disrupting power supply. Across Tamil Nadu, 4 people have died, around 100 cattle dead, and nearly 200 huts and houses damaged. More than 9,000 people have been shifted to relief centers. அதேபோல் அரசு ஊழியர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு செயல்பாடு காரணமாக மக்கள் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பெரிய அளவில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு எந்த சேதங்களும் இல்லை.
தலைவர்கள் தரப்பிலும் பொதுமக்கள் தரப்பிலும் ஏதேனும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்க கோரிக்கை என்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்க படகுகளுக்கு நிவாரணத்தை அதான் கணக்கெடுப்பு முழுமையா வந்த பிறகு. The cyclone triggered heavy rains in neighboring Andhra Pradesh too, leading to flooding in Chittoor and Tirupati. It's a sigh of relief, and Tamil Nadu is assessing damages by Cyclone Mandous. The Met has forecast light to moderate rainfall across coastal Tamil Nadu, even as the cyclone weakens into a depression. With Nagaraju in Hyderabad, at Panayur, with Suresh, Sam Daniel, for NDTV. All right, now Brazil's exit from the Football World Cup after its loss to Croatia has left fans in South America devastated. But the city that celebrates South American football is now hoping Argentina lifts the cup. Disappointment for Brazil fans. Calcutta as a city loves its football. And of course, South American football has a special following here, which is why even if the FIFA World Cup is held in Qatar or no matter which part of the world, you will see fans put up posters of their favorite players. And some disappointed Brazil fans with me as well. दुख हो रहा है बहुत? हाँ, हो तो रहा है, बिकॉज टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुकी है. जैसे नेमार ने लास्ट में गोल किया था, ऐसा होप जगा था अंदर, पर एट लास्ट पेनल्टी मिस हो गया, इसलिए तो दुख तो हो रहा है. You're not lucky. You think it was purely luck? Yeah, we are just 4 minutes away from a semi-final berth. For Kolkata, Brazil is a different emotion, what we say. And Brazil going out is a pain. But it's not just Brazil that has a following in Kolkata. Argentina has an equal following in this football crazy city. Legends like Maradona and Messi have visited Kolkata, so now hopes are on Argentina. We love Argentina as well. We all actually. Yeah. All right. We are a big fan of Latin American football. In another football-loving state, Kerala fans say they will miss Brazil. पूरे फैंस केरला का परेशान हो गया कि हमको ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जरूर फाइनल देखेगा. Brazilian fans definitely are unhappy, but perhaps the glimmer of hope is that Latin American football is still alive in the tournament. Argentina is still there in the game. Semi-final for Argentina to take place soon, and they're hoping that while the disappointment of Brazil going out of the tournament is going to be felt for these fans, they're hoping Latin American football eventually wins. That's what Calcutta and its football is all about. With camera person Aniruddha Tripathi in Kolkata, Saurabh Gupta, NDTV.